They call it the graveyard of ships. Over 100 ocean-going vessels lined up side by side along a 10-mile stretch of smoky beach. It's large enough to be seen from space, but few people have even heard of it, let alone seen it. With their immense hulls exposed, keels sitting on shifting sands, the ships look as if they could easily topple over at any moment. The yards here in Reselling recycle over half of all ocean-going vessels salvaged around the world. In most shipyards, one expects to see piers, dry docks, and specialized machinery. Here, ships lie beached on tidal flats waiting to be torn apart with torch in hand by thousands of migrant workers. This is one of the most dangerous industrial sites in the world. The workers face numerous risks to their safety, such as fires, explosions, or falling steel plates, and they lack basic protective equipment. Exposure to toxic waste for many will result in long-term illness or early death. The environmental impact of breaking ships this way has also been devastating. These beaches were once pristine, but toxic waste from the breaking process have severely impacted local agriculture and fishing industries. Yet shipbreaking has become a booming business for a few privileged shipyard owners in less developed countries such as India, Pakistan, and Bangladesh. The process begins when a ship owner sells the vessel to a cash buyer, who then sells it to a shipbreaking yard. Once the sale is finalized, the ship, cargo-free, heads to this beach at Reselling, where it is run aground at high tide. It's the tides that make this part of the coast so effective for shipbreaking. Basically, owners want to sell their vessels, who are the ship owners. These cash buyers are there here, who buy these vessels, and they deliver it here. It's a one-time buying, and if the buying is good, automatically the whole deal will be good. Benefit of this industry is that it doesn't require any power. Then electric power, any type of energy. Basically, it's totally based on labor. So that is a plus point of this industry. अलंग में सक्सेस होने का सबसे बड़ा रीजन था हाई टाइड्स। हाई टाइड मतलब हाई टाइड क्या होती है, यहाँ पे हाई टाइड बहुत अच्छी है। यहाँ पे जब भी टाइड आती है तो पानी मतलब इतना आ जाता है कि वो जहाज़ बीच हो सकता है, और लो टाइड भी जहाँ इतनी है तो कम से कम 2500 फुट पीछे तक पानी उतर जाता है। मतलब उसकी हाई टाइड और लो टाइड अच्छी है, वो हमेशा ऐसा नहीं होता है। नॉर्मली किनारों के ऊपर इतनी लो टाइड और हाई टाइड नहीं है कि पानी इतना पीछे भी जाता है और इतना ऊपर भी आता है। तो यहाँ ये किनारा इतना अच्छा है, नेचुरल गिफ्ट है इसको अलंग को, ये बहुत अच्छा है इसको बीचिंग के लिए। ऐसा होता है सर कि जहाज दूर भी खड़ा हो जाता है, ज़्यादा पानी होगा तो ड्राफ्ट अच्छा होगा तो जहाज धक्के तक आ सकती है, या नहीं तो 500, 600 या 400 फुट दूर पर रहेगा शिप, और उस शिप को खींचने के लिए चेन के द्वारा फिर हम लोग बांधी करते हैं, वायर के द्वारा फिर उसको खींच के लाते हैं। ये हर दिन प्रोसेस नहीं होता है, इसका वर्क चलता है अमावस्या और पूर्णिमा, जब वाटर का जो है लेवल ऊंचा होगा तब टाइड
वाटर जब होगा तो हाई टाइड में ही हम लोग इसको खींचते हैं। इसको बोला जाता है हाई टाइड ज्योग्राफी के अनुसार जी। और उसमें खींच करके हम लाते हैं, फिर इसकी साफ़ सफाई है और हम उसको साफ़ सफाई करवाते हैं अपने लेबर से, मशीनरी से। डीजल, कचरा जितना जो है, डिब्बा, ग्रीस, पेंट, जितने जलने वाली लकड़े, वुड्स जितना है सब हम ऊपर से निकाल लेते हैं। और इसके बाद में गुजरात पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड आते हैं, फिर हमको परमिशन देता है कटिंग का, तभी हम काट सकते हैं। मेन तो पूरे शिप की एलडीटी जो है वो तो मैक्सिमम लोहे की ही है, और शिप ब्रेकिंग जो है वो लोहे से ही है। ये थोड़ा जो कुछ निकल जाते हैं उसके बाद फिर हम अपना आगे से कटिंग का कार्य चालू करते हैं। कटिंग में क्या होता है कि एक पहले शिप की ऊपर की कटिंग होती है, वो जब कटिंग हो जाती है तो फिर उसके बाद हम वायर रोप लगाकर, अभी थोड़ी देर पहले एक टुकड़ा हमने गिराया है, तो वो हमारा सुपरवाइज़र, सेफ्टी सुपरवाइज़र हमारे मिस्टर जगमोहन सिंह, वो हमेशा जहाज के ऊपर रहेंगे। ऐसा कुछ भी काम होता है तो वो जहाज के ऊपर रहेगा। दूसरा सेफ्टी सुपरवाइज़र बंटू कुमार मीना, वो यहाँ रहते हैं नीचे, और मैं खुद, और हमारे जो यहाँ पे काम करवाते हैं उनको इंजीनियर तो आप नहीं कर सकते बिकॉज इज़ नॉट टेक्निकल, लेकिन वो एज ए इंजीनियर यहाँ पे उनको मुकादम बोलते हैं, तो वो साथ हमारे रहते हैं। फिर उनके साथ वो टुकड़े को जब ऊपर तैयार हो गया तो वायर रोप से उसको नीचे गिराने के बाद फिर हम उसको खींच करके शोर पे ले आएंगे। शोर पे लाने के बाद फिर उसके स्मॉल पीसेस, मीन्स अगर 100 फीट का टुकड़ा है तो उसको 15-15 फीट के टुकड़े बना देंगे, 6 पीस 7 पीस। फिर हमारी क्रेन उसको ला करके उठाएगी और ला करके फील्ड में डाल देगी। फील्ड में आ जाएगी तो फील्ड में फिर उसके बाद जो ये गैस कटर है ये कटिंग करने लगेगी। माल कटिंग करने के बाद उस टुकड़े को ला करके अलग अलग ग्रेड बने हुए हैं कि ये माल इस टाइप का है। As the cutting progresses, the yard owners begin selling the steel plates to rolling mills, furnaces, and steel fabricators. The entire contents of the ship are removed. All the accommodations, wood, beds, kitchen appliances, which all told account for 40 to 50 tons of every vessel. Even some of the toxic materials on board, such as asbestos contained in ropes, in doors, and surrounding pipes, are resold on local markets. For miles along the road leading to Alang, an army of independent vendors have set up shop. Each vendor specializes in selling different parts of the ship: lifeboats, portholes, generators, electrical wiring, TVs. Buyers come from across the country and abroad. Everything is sold. Nothing is wasted. One of the first jobs assigned to a new worker is simply cleaning the sheets of steel. Other entry-level workers break apart pieces of metal by hand. Some men work as jodiwalas, or wire people. Using wire or rope, they help pull the ship in or drag fallen pieces further up onto the beach. The bodywalas, or torch people, cut the sections of metal down to sizes that can be lifted and loaded by carriers. Almost all of the ship's metal is cut with torches.
However, certain metals are more valuable, and intense heat reduces their resale value. These metals need to be broken apart by hand, with only chisels, hammers, and brute force. The bodiewallahs working on the ships are the elites of the shipbreaking yards. They have learned the skills of cutting over many years with little or no formal training. The most experienced bodiewallahs supervise the breaking operation. हाँ, पहले जो आदमी आता है तो हेल्पर ही करता है, हेल्पर। कोई भी काम सीखने के लिए तो छोटा ही काम करना पड़ता है आदमी को। एक काम सीखने के लिए दूसरा काम भी अगल बगल में हर प्रकार का काम होता है। पहले हेल्पर ही किया मैंने, हेल्पर करके बत्ती सीखा फील्ड में। 3-4 साल हेल्पर ही किया सीखने के लिए, तो फील्ड में फिर चलाया। ये फील्ड में जब 2-3 साल चलाया, फिर टुकड़ा पे आ गया, टुकड़ा से अभी ऊपर। ऐसे काम सीखने का दिमाग, खुद का दिमाग लगाना पड़ता ज़्यादा। हम लोग का मकादम है, तो जो काम बताते हैं वो काम, जड़ी का काम हम करते हैं। वायर खींचने बोलेगा, वायर खींच के लेते हो दरिया पर। उसके बाद ऊपर में वायर चढ़ाते हो, वायर चढ़ा के उसको सिविल लेवल में सीलिंग करके सिविल लगा के फटा देता हूँ। फिर नीचे आ जाता हूँ, नीचे आके बेंच पर लगा के ड्राम पर उसको खिंचाई करता हूँ। उसके बाद फिर उसको खिंचाई करके बाहर निकाल देता हूँ। और ऊपर जब खींच लेते हैं तो हम लोग टुकड़े वाले जो हैं उसमें जाते हैं, जिधर मौका देखे कि एक टुकड़ा करके बैठाते जाते हैं। उसके बाद जहाँ डेंजर होता है, महसूस होता है, वहाँ काट के साइड से हवलदार काट के हम लोग निकल जाते हैं। क्रेन वाले को बोलते हैं कि भैया एक टुकड़ा उठा लो, तब आगे काम इसमें होगा। और यदि यहाँ पर कुछ खराब चीज़ है तो डेंजर के साथ साथ प्रदूषण यहाँ ज़्यादा है, जो हम लोग को पसंद नहीं है, लेकिन मजबूरियाँ है। The beach is a scene of absolute chaos. The heat, smoke, and smells are overwhelming. Huge chunks of metal lie everywhere, obscuring visibility. The sounds of cranes and metal being torn apart are deafening. The potential for disaster is always present. It's almost impossible for the workers to know who is working where. In this state of perpetual confusion, supervisors are important, particularly good ones. सबसे उनमें ये था कि हर इंसान से घुल मिल के बात करता था, उसके दिल को बहलाना, उसके दुख को समझना और उसके तकलीफ में साथ देना। जब तक हम हर इंसान को अपने बराबर नहीं समझेंगे, उसके दुख को हम नहीं समझेंगे, तब तक हम अच्छे यहाँ। काम की विशेषता उसमें अनुभव बहुत ज़्यादा था, उनमें अनुभव, और लोगों को जागरूकता पैदा करते थे। वो समझाते बुझाते थे हर समय कि कैसे काम करना है, कैसे क्या करना है। सुपरवाइज़र मैं 5 साल से हूँ। इसके पहले मैं 2-3 प्लॉटों में काम किया हूँ। वहाँ पे लेबर कंट्रोलर है, नहीं कि सुपरवाइज़र ही, वो भी सुपरवाइज़र ही होता है, लेकिन ये जो सेफ्टी सुपरवाइज़र एक अलग होता है।
सेफ्टी सुपरवाइजर का मतलब जितने वर्कर्स हैं, जितने लेबर हमारे वहाँ काम करते हैं, उनको सही सलामती में रखना, कोई दुर्घटना न हो, कोई बात नहीं बिगड़े, कोई बने नहीं, आदमी आराम से सुरक्षा से रहे और अपना काम करे, 2 वक्त की रोटी का अपना जीविका साधारण से चला सके। Work starts as the sun rises and stops as the sun sets. Tea breaks and lunch times punctuate the day. दिन हम लोग सुबह 4:30 बजे उठते हैं, उसके बाद लैट्रिन जाते हैं, उसके बाद हम विहंगम योग के साधक हैं। सदा फलदेव जी महाराज हमारे गुरु हुए, तो उनका मैं पूजा करता हूँ सुबह शाम। तो सुबह में फिर आधा घंटा 1 घंटा पूजा कर लेता हूँ, साधना करता हूँ। पूजा करने के बाद खाना पीना बना के खा के 6:30 बजे खाना खा के फिर यहाँ ड्यूटी के लिए आ जाता हूँ। फिर यहाँ से ड्यूटी जब आता हूँ तो यहाँ प्लान उलान लगता है, हेल्पर लोग हमारे साथ हैं। तो यहाँ प्लान उलान लगता है, हेल्पर लोग हमारे साथ हैं। हेल्पर जब प्लान ला के लगाते हैं घड़ी बाटला में, उसके बाद हम लोग काम चालू करते हैं। 15 मिनट 20 मिनट आधा घंटा लगता है। बाकी लोग 1 बजे जाते हैं फील्ड वाले, हम लोग 1:30 बजे जाते हैं। 1:30 बजे से फिर वही पौन घंटा में आते हैं, 45 मिनट में। उसके बाद फिर चाय के लिए निकलते हैं। ऐसे यहाँ घंटी लगती है 3 बजे, लेकिन हम लोग टुकड़े वाले और ऊपर वाले आधा घंटा बाद निकलते हैं चाय पीने। फिर चाय पी के जाते हैं अंदर, फिर अपना काम होता है। फिर आजकल 6 बजे छुट्टी होती है। 6 बजे जब मैं खोली जाता हूँ तो पहला नहाता हूँ, उसके बाद फिर पूजा करता हूँ, 1 घंटा पूजा करता हूँ। उसके बाद फिर खाना पीना बना के उसके बाद खाए, फिर सो गए। फिर सुबह 4:30 बजे उठ जाना। दिनचर्या हमारा यही है यहाँ। The migrant workers come from many different parts of India. They refer to themselves as coming from foreign lands, by which they mean different states in India. Many speak different languages and dialects and follow different customs and religions. लेकिन इधर आ गया तो जितना मैं यहाँ पैसा कमा सकता हूँ, वहाँ दूसरी जगह तो जाके नहीं कमा सकता हूँ। दूसरी जगह दूसरा काम हमको सीखना होगा, और यहाँ तो सीखे हुए हैं। अभी हम लोग का 350 रुपया रेट है। लेबर वाला काम करने जाएंगे तो 100 रुपया रेट मिलेगा। और मान लिया जाए लेबर का भारत का जो ये है 95 ये कितना रुपया अभी चल रहा है, तो उतना ही मिलेगा, 100 रुपया कहीं मिलेगा। लेकिन ये तो एक कला है, जैसे कटिंग भी हम कर रहे हैं तो एक कला है। 2 घंटा की जगह में 4 घंटा चले, मैं 6 महीना यहाँ रहूँगा, 4 महीना रह के अपना गांव चला जाऊँगा। अपना गांव सबको प्यारा होता है, अपना बीबी, अपना बच्चे, अपने माँ बाप सबको प्यारे होते हैं, और सब चाहते हैं कि अपना गांव में ही रहें। लेकिन मजबूरियाँ ऐसा है कि यहाँ रहना पड़ता है और कठिनाई वाला भी काम करना पड़ता है। ये काम में आए, मैंने सुना था कि अलग में शिप कटती है, तो मेरा भी चॉइस हुआ कि चले मैं भी देखूं शिप का होती है कैसी। जो आदमी नहीं देखा है तो सोचता है कोई ऐसा प्रकार का
वस्तु है वे, तो सोचता है कैसा है क्या है। जब देखेंगे, मैंने आकर के यहाँ पर देखा, मेरा दिल किया कि मैं भी इसमें लग जाऊँ। मेहनत वाला ये काम है। मैं भी साथ में लग गया, करते करते मैं भी सीख गया। आदमियों के एक दूसरे को देख करके सीख गया काम। धीरे धीरे मैं भी आगे बढ़ता गया। आज मुकादमी कर रहा हूँ। सेट का काम आता है शिप को लगा देना, लेकिन तोड़ना फोड़ना कटिंग का काम अपना है, हम काट के वो देते हैं। पहले आया मैं सूरत से, हो गया मेरा 15 साल। तो दूसरा जगह पर जाएगा, देखेगा कैसा हो कैसा नहीं, थोड़ा पैसा भी हो जाएगा। आदमी लोग को भी बोला अलंग में बहुत पैसा होता है, अच्छा काम है। बोला चलो देखेगा। आया देखा तो काम बहुत डेंजर काम है। एक दिन गया अपना ये मकादाम का काम पर प्लेट उठाना, 162 नंबर में धक्का गया तो देखा एक दिन ही मैं झुकने नहीं सका। बेगारी में घुसेगा बोल के सोचा गया अंदर में। वो मकादाम बोला जोड़ी से नाम लगाओ, जोड़ी का आदमी काम है। जो जोड़ी में नाम लगा दिया, जोड़ी में चार महीना हो गया काम करता। अभी भी मन तोड़ गया, फिर सूरत चला जाने का विचार है। ज़्यादा कष्ट होता है ना काम, इसलिए मन भी तोड़ गया। फिर निकलता अभी सूरत जाने के लिए मन विचार करता है। क्या चीज़ नहीं है, मजबूर में ऐसे काम करना पड़ता है हम लोग, क्योंकि हमारा गांव से कुछ कंपनी फंपनी नहीं है उड़ीसा में है। लेकिन पढ़ा सीखते होगा तो इसमें लगेगा, कुछ ज़्यादा पढ़ाई होगा तो इसमें LND कोई भी काम कर सकता है, कोई भी जाके। हम ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं है, गरीब आदमी, इसलिए काम करना है तो खाना मिलेगा, नहीं काम करेगा तो खाना नहीं मिलेगा। इसलिए माँ बहन सब कुछ है, इसने शादीशुदा है, बहन जाएगा ससुराल घर, ऐसे इसलिए हम लोग बाहर विदेश में काम करके बस पैसा भेजेगा तो घर चलेगा। In shanty towns across the road from the shipyards, workers live in shacks built from scrap, salvaged from the ships. Anywhere from 3 to several men share a single room. They sleep on hardened mud floors covered with plastic or on wooden platforms. The shanty towns have no running water, electricity, or sanitation. Workers are exposed to pollutants from the air they breathe, the water they drink, and the fish they eat. Under these living conditions, diseases are rampant, especially those associated with poor sanitation and lack of clean water. Most of the men working here leave their families behind in their villages. Prostitutes frequent the camps, and sexually transmitted diseases are common among the workers. A few of the more enterprising workers manage to break away from the shipyards by offering goods and services to other workers, at least those who can afford to pay. पूरा दिन पे खाना बनाता है, फिर वो लोग को खाना खा के जाते फर्स्ट। क्या काम है, सुबह से उठ के पहले ये परिवार का काटना पड़ेगा, बाद में ये अंगार लगाएगा, बाद पानी लो यही साइज करने के लिए उसको खाना बनाता है, सब्जी बनाता है, दाल बनाता है और भजा बनाता है। हाँ, और एक बार 2 बार भी बनाता है। अभी तो एक बार खाना खा के गया था वो आदमी, 2 बार और बनाता अभी। हाँ, पर अभी के साइज पूरी काटना पड़ेगा, ये सब काम करता है। 3 बजे उठता है रात को, क्या करेगा। वो तो लोग को आदमी 7 बजे खाना खा के गया था ना।
back in the 70s. All of the shipbreaking took place in developed countries. It was in Europe, in America. First ones that moved to developing countries were the more dangerous and dirty ones that in the North we started to take concern about first. We started saying, oh my God, this is a dangerous industry, we have to protect the workers. So those were the first ones to move because they wanted to avoid these new regulations. Every vessel on this beach contains any number of hazardous substances: asbestos, oil residues, lead, PCBs, mercury, arsenic, and cadmium, among others. These ships end up here in Alang because of the low cost of labor and the lax enforcement of worker rights and environmental regulations. Under international law, it is illegal to export toxic vessels to countries which lack proper containment facilities. It is generally accepted that under a fair allocation of responsibilities, the developed countries should deal with their own toxic waste and not dump it in the lowest wage countries. The principles of polluter pays and producer liability are legally settled, but the reality is very different. So very similar to the migration of dirty industries, in the late 1980s we saw this big epidemic of a migration of toxic waste, and it was moving for the same reason. It was very expensive, increasingly so, to deal with it properly in the north, in the developed countries, because we had more regulations to take care of it and not let it poison people. So it was more and more expensive to properly dispose of hazardous waste in the north. Why don't we just send it to the south? We've got great shipping lines, we have intermodal transport now, it's very convenient to move wastes and materials, and it doesn't cost that much relatively. So it wasn't just about cheap labor, it was about finding those areas where you could dump it without getting the bill. The biggest problem that you find working on shipbreaking is the access. There are no government reports at this point of time to say that what are the environmental costs of this recycling, what are the human health costs of this recycling, how many people have actually lost their one arm or two arms, or they have been maimed, or they have been injured, or what has been the insurance policy for these workers, and how much compensation has been paid to them, how have children been taken care of. So I think these are larger issues that we don't understand. We just see what is there on the face of it. And there are many things which are not on, or which are visible. They are invisible. And this is something that we need to understand if you're looking at the total cost of environmental and human health costs. बहुत अच्छा बिजनेस है, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है। खाली इसको बदनाम किया जाता है, या आप समझो ग्रीन पीस हुआ या फलाना हुआ, खाली आगे बदनाम करते हैं। नथिंग इज देयर। अगर आज आप देखोगे जाके किसी शहर में, तो वहाँ गंदगी ज़्यादा होगी, यहाँ नहीं है। जो लोग बाहर से आते हैं उनको हम ये बोलते हैं कहाँ है, बताइए तो सही। इवन हम भावनगर रहते, भावनगर में है, यहाँ नहीं है। तो ये सब खाली बदनाम किया जाता है, बाकी यहाँ कुछ नहीं है। एकदम बहुत अच्छा पीसफुली और अच्छी तरीके से काम किया जाता है, और लेबर के लिए ये बहुत अच्छा है, क्योंकि लेबर की सैलरी यहाँ पे आज जो अनस्किल्ड लेबर है, बिल्कुल अनपढ़ है, उसको 8 से 12 हज़ार तक की सैलरी है मंथली। जो आज कहाँ है, कितनी सैलरी कहाँ पर है, पढ़े लिखे को नहीं मिल रही। ये तो यहाँ अनपढ़ लोग हैं, और उन लोगों को 8 घंटे काम करना है, 8 घंटे में उनको इतनी अच्छी सैलरी मिल रही है, उसके लिए क्या प्रॉब्लम है। You can see greenery over here in Alang everywhere. So there is no question of pollution. Because if pollution is there, you can't see green trees also. Second thing, we have not found any worker have got diseases because of Alang, means because of cutting ship. There is no major disease has been found till today in Alang to any worker.
So I don't think there is any bad thing of recycling a ship. जैसे सबसे बुरा यहाँ हमको लगता है प्रदूषण। नहीं चाह के भी प्रदूषण में रहना पड़ता है। मास्क भी हम लोग लगाते हैं ना, तो कहीं कहीं वैसा धुआं मिलता है कि अंदर चल ही जाता है। बुरा सही में कहा जाए तो हमारे लिए प्रदूषण है। तो धुआं कितने रंग का है ना, दुर्गंध भी उसके साथ रहता है। इस धुआं में दुर्गंध भी रहता है। जैसे हम लोग लकड़ी जलाते हैं, उसका धुआं उतना ख़राब नहीं होता है, लेकिन इसमें पेंट जल रहा है, क्या तेल जल रहा है, क्या जल रहा है, इसका दुर्गंध दूसरे हिसाब से। Recently, due to pressure from environmental NGOs, there has been a push towards safer practices in Alang. All workers must attend a 3-day training program by the Gujarat Marine Board before they start work. Protective clothing, hard hats, and goggles for the cutters are now supposed to be worn by the workers. गुजरात ऐसे प्रांत है, यदि यही चीज़ अगर प्रांत में होता, जैसे बिहार, बंगाल, मैं इसी प्लॉट में चला रहा था, तो मैं बीच में काट रहा था। एक मेरे जोड़ीदार बत्ती वाला था, उधर टुकड़ा जो है इतना उठा हुआ था, उधर काट रहा था। मेरा पूर्वा हेल्पर जो था इधर खड़ा था, वो टुकड़े के सामने खड़ा था। वो उन्होंने ना हमको बोला, जैसे हम लोग हवलदार जब काटता हूँ, जैसे टुकड़ा बैठने वाले हैं तो आजू बाजू लोग को बाजू बोल देता हूँ, साइड रहो या बैठेगा, चोट लग जाएगा तुम। उन्होंने किसी को नहीं बोला। मैं बीच में बैठ के काट रहा था, मेरा हेल्पर वहाँ खड़ा था, वो झड़प के बगले में खड़ा था, और वो जब काटा तो वो जंप करके सरक गया झड़प। अब वो सरक गया तो वो पूर्वा चिल्लाया, उस्ताद उस्ताद बचाओ। मैं दौड़ा, 10-15 को आदमी दौड़े। वो टुकड़ा हल्का था, इसलिए उसको हल्का सा चोट लगा है, क्रैक कर गया, फिर भी हड्डी जो है क्रैक कर गया। और यदि पूर्वा इधर ही खड़ा है वो। मेरे गांव का एक लड़का था, वो प्लेट उठाता था, जैसे यहाँ प्लेट उठाते हैं ना लोहा, वो उठाता था, वो गिरा रहा था, उसी में यहाँ फंस गया था उसका, उस लड़का के। और प्लेट जब गिराया तो वो भी गिर गया नीचे, और वो गिर गया नीचे तो माथा में उसका लग गया। तो बत्ती वाला गलती था, मेरा जोड़ीदार बत्ती वाला जो काट रहा था, उन्होंने यदि बाजू बोल देता तो किसी को कुछ नहीं होता, वो बत्ती वाला गलती से लगा। और ये दूसरा जो मैं बताया, वो तो मान लीजिए यहाँ हम रखे हैं प्लेट और यहाँ फंस गया लोहा, तो किस्मत का समझिए। चौराने में काम किया, 194 में। उसमें बहुत चोट लगा मेरे को, नया है, 1 महीना काम किया, बहुत चोट लगा पाँव पर, हाथ पर। अगर दरिया का अंदर में जाएगा तो कुछ कीचड़ में कुछ था, अगर शीशा उसा है, नहीं तो टीना है, ऐसे बहुत की चीज़ पड़ता है। अंदर से घुस जाएगा तो अंदर भी घुस जाता है, ऐसे भी होता है काम, डेंजर काम है। यही कोई काम है क्या, 2 लोगों को लेके जाएंगे? रेट का कोई नक्की नहीं रहता, कोई किसी को पूछना, जैसे आप बोलते पीएफ कटेगा, ये कटेगा, कोई जगह में दे रहे पीएफ, ये बात नहीं कर रहा हूँ मैं, पीएफ भी मिल रहा है, लेकिन हर एक जगह में नहीं कर रहे। जब किसी का एक्सीडेंट हो गया, उसका जो है, मान लीजिए उसका पैर फ्रैक्चर हो गया, डैमेज हो गया, उसको जो अपना एश्योरेंस बनाता है, हर एक शिप ब्रेकर के पास एश्योरेंस है, लेकिन एश्योरेंस नहीं देते उसको। अच्छा, एश्योरेंस नहीं देते? नहीं, जो रिन्यूएबल वैल्यू है, ये सब में एश्योरेंस सबका मिलता है। इधर से कोई इतना तकात नहीं है, तो थोड़ा बहुत लग गया, उसको डैमेज हो गया, बस दवा कर लेते, दवा करने बाद में बोलते जा भाई तो वही भी घर पे आराम करते। A lot of these people aren't even aware that they're dealing with toxic materials, that their livelihoods
are at stake not only from hand to mouth, but they're going to die from these diseases at a point where then they can't even feed their families. So those things most of the workers are not aware of because you cannot see the impact of things like asbestos and PCBs and dioxins, etc. They don't even know what a dioxin is. But when they use that cutting torch on those PCB-laden paints, they're creating dioxin, they breathe it right there. You're going to die of occupational disease, much more likely. And we do not even record those deaths. We're only looking at people that get killed on the site. Boom, they're killed. The people that die later from occupational disease, they're not recorded. Not in Alam, not in India. लेकिन हम लोग काम करते आते हैं सुबह से बस भगवान को माँ को एक जहाँ भी पूजा करते हैं बस हम लोग कुछ नहीं होने दो आराम से काम हो के हम घर जाने का बस मनुष्य के जीवन में नाना प्रकार के हर एक प्रकार के समय आया करते हैं, ठीक है। उस समय के अनुकूल में आदमी कौन सा कर्म और मजदूरी बड़ा ही अंतर होता है। कर्म किसको कहते हैं, मजदूरी किसको कहते हैं, अलग अलग चीज़। मनुष्य अपनी जीविका साधारण से आसानी से न चला सके और अपने को कष्ट उठा के अपनी जीविका चलाए, उसे ही मजदूरी कहते हैं। आप मजदूरी नहीं कर रहे हो, सरकारी नौकरी करो, मजदूरी नहीं है। मजदूरी वो होती है, मजदूरी एक बहुत बड़ा दुख का शब्द है। उसे बरसात हो कि गर्मी हो कि ठंडी हो, किसी भी ऋतु में उसे काम करना ही करना है। Shipbreaking is done in other countries as well. China, Turkey, Bangladesh, and Pakistan all take part in this thriving industry. Everywhere, the goals are the same. Reduce these old ships to nothing, hold down costs, and resell everything to make the best profit. Shipbreaking also takes place in the United States. By law, ships owned by the government, the Navy Maritime Administration, must be recycled under OSHA, EPA, and state regulations. They are not sent to less developed countries. In the United States, Brownsville, Texas has become the center for the U.S. ship recycling industry. 5 of the nation's ship recycling companies are located here. From the time the ship arrives, the pilots bring the ship to the pier. I make sure the ship's properly secured. From there, we do a safety inspection of the ship. It takes anywhere from a few hours to a couple of days, depending on the side of the ship. After we're done with our safety inspection, I ensure that the samples are taken, make sure all the different environmental concerns are addressed. Then the asbestos crews and then PCB crews take over. They start doing their abatement work, and then they're followed by the labor crews to take out insulation, cable, things of that nature. And then after they're finished, the boat's pretty much a skeleton after that, and the ship cutters come in. About that time, we're able to put the ship into a dismantling canal, which is basically a little ditch that has a winch at the end of it.
Then we drag the boat up with the winch. Ship cutters dismantle the ship piece by piece all the way to the stern, and it's an ongoing process. A lot of people don't even know that PCBs are used in old ship paints and old insulation, etc., and rubber materials and flooring through ships for many, many years, and it didn't phase it out until the late 70s. So some of these ships, hopefully now there's less and less PCBs, but the ships that are being broken now largely still have this banned chemical in them. Nowhere does a better job in the world on PCBs than Brownsville. They take care of it. It's even better than Europe. Industry exists because of laws. So the laws created our industry here instead of these ships going over to India or Bangladesh and be polluting the beaches and polluting the world oceans. Now, because of our laws, they're kept here. They're recycled with very strict rules. And we have enforcement people that watch what's being done so that everybody plays in a level playing field. There are some similarities in shipbreaking between the U.S. and India. The major job of cutting the ship remains the same. A ship is cut from front to back and pulled further inland as the work proceeds. The larger pieces are brought up the shore and cut into smaller pieces. Cranes are used in both countries. The metal is shipped to steel plants for reprocessing. While the goals and major processes are similar across the world, there are some major differences in the U.S. story. First, there are differences in the use of technology. Shearers pick up large sections of metal, toss them around in a violent way, and cut them into smaller pieces. A remote-controlled cutter breaks up the deck. Magnetic lifters pick up the metal parts, not workers. There are differences in environmental and safety practices. From the time the ship arrives, there are continuous abatement procedures dealing with asbestos, PCBs, and other hazardous elements. No workers breathe in asbestos fibers. Chips of paint containing PCBs are collected and safely stored to be burnt at high temperatures. Each cutter has another worker next to him, preventing possible fires. There are differences in training, safety protection, and the awareness of workers about the dangers they're exposed to. Information about risks is readily available.
the Brownsville workers have their own migrant stories. In this yard, 95% of the workers are Hispanic, and some 60% cross the border every day from Mexico. Although the work is tedious and dangerous in both places, there are significant differences in job satisfaction. The more you learn, the better you become, and the better that, and and the higher you can become in your position or the company that you work with. I wanted to do something different. I mean, I was tired of the same old routine, and I like it. I mean, I love my job. We have a potential, let's say, of getting higher in the ladder, like say, becoming a safety or a manager in the company. I mean, they'll give us a chance, the opportunity to climb up the ladder and stuff, which is good. I like having the challenge. I like having the like I said, have deadlines on me. I like the responsibility. I like being able to be in charge and performing and delivering at the same time. Everything within the safety guidelines. I've always tried to be number one, and I've always worked hard at everything I do. I love my job. If not, I wouldn't be here. The thing I like most about being a contract cutter is that nobody puts pressure on you because you're getting paid for what you do. So if you feel kind of tired or whatever, you could go take a little break and then get back to work. Shipbreakers in India have different feelings. जो तापरे हमारा आसपास गांव का तो वहाँ आ रहा है पूरा 1 साल 6 महीना 7 महीना तक वहाँ रह जाता है क्योंकि उसका गांव में थोड़ा कुछ खेती बाड़ी नहीं ऐसे प्रॉब्लम में आकर पूरा 1 साल वहाँ रह कर चला पूछते हैं हम भी आसपास इसको तुम इतना महीना कि 8 महीना है कि 1 साल रहा है कितना रुपया कमा कर ला रहा है ऐसे भी पूछ रहा है हम जो जिसको बोलता है अरे ओलोंग जा रहा है तो ओलोंग में हमारा उड़ीसा का पैसा लेकर जा रहा है ना ओलोंग का पैसा लेकर उड़ीसा ऐसे तो पूछता हम भी यहाँ काम करते हैं शरीर अच्छा रहेगा तो घर पे पैसा भेजेगा और शरीर कुछ गड़बड़ रहेगा तो भी कुछ नहीं पैसा पहुँचने वाला नहीं है ऐसे बस अब माँ बाप खेत में काम करता है गाँव से कोई बोलेगा तो खेत में जाएगा कोई नहीं होगा तो नहीं ऐसे पड़ा रहेगा घर पे बस The work life, it looks good. The company is to me is thriving, and when I first started, we never had as many ships as we do, for the past, let's say, 3 years. We've made a lot of changes here in the company, and since I've been here, this company has grown a lot. I'm hoping to one day be a ship cutter, be a little bit more challenging as far as more responsibility, more being on your toes, stuff like that. Probably be a safety or a supervisor, I think so. I've had other positions at the other companies, and that I know I can do here too as well. And it'll benefit the company with my knowledge that I have. Job commitment in India is very different. करने के लिए कुछ याद आता है लेकिन वो हमारा पास पावर नहीं है लेकिन हमें इतना ही काम करके चला जाता हूँ जो करने के लिए चाहता हूँ वो करने के लिए नहीं देगा क्योंकि वो हमारा बात नहीं रहेगा ना इसलिए कुछ नहीं मैं ये काम छोड़ देता हूँ छोड़ने के इरादा है मेरे को क्योंकि नहीं करना है गांव जाना है और गांव से कहीं भी नहीं जाएगा अभी विदेश में हूँ विदेश कर रहा हूँ विदेश में मन टूट गया अब एक काम के लायक नहीं रहा थोड़ी देर तक करेगा फिर वापस चला जाएगा यहाँ काम आगे बढ़ना नहीं चाहता हूँ
As both workers look into the future, more differences emerge. Pues mi futuro es pues, seguir con vida y seguir trabajando aquí. Es como, si no se puede trabajar aquí, pues, buscarle en otra parte. Ese es mi futuro, seguir trabajando, seguir manteniendo a mi familia. Eso es todo lo que puedo decir por ahorita. I think it looks good. I mean, as far as the economy, you know, iron goes up, goes down. You know, I think about that. I think about when the jobs, the layoffs and stuff like that. Is it going to affect us? Me and my family talk about that. You know, but then we get all these ships in here, and I talk to my friends. I say we might be all right. I think our future looks good. I think it looks real good. Tengo 2 niñas y 2 niños. We have a big family. Voy para 14 años. Mis hijos, el más grande tiene 13. Sí, y el más chiquito tiene 3. No, yo le digo a mis hijos que estudien mucho, que no agarren esta carrera porque está un poco peligroso. Que sean algo, maestros, policías, algo mucho mejor. Que sigan adelante, que no. ऐसा बात नहीं है हमारा, इसे करते करते जाते भगवान जो दिखाएगा बुद्धि, ये बुद्धि से काम करेगा। भगवान जो बुद्धि देगा वो बुद्धि से काम कर नहीं सकते। अगर तुमसे इसे अमीर नहीं है, पैसा कुछ नहीं है ना, कोई क्या कर सकते हैं? कि बिजनेस कर सकते हैं ना, कोई कंपनी कर सकते हैं ना, कोई मशीन बैठे सकते हैं। ऐसा नहीं है हमारा पास। भविष्य में देखिए किस्मत भी कुछ साथ दे आदमी का। मैं प्रयास किया था बीच में कि कोई बिजनेस करूं। मैंने गांव पर बिजनेस शुरू किया, मेरा बिजनेस चल नहीं पाया। मैं कपड़े का दुकान किया था, राशन दुकान किया था, ये बिजनेस नहीं चल पाया, तो मैं पुनः वापस चला आया। आगे भविष्य में यदि कुछ पैसा हो और कुछ पैसा धंधा शुरू हो, आगे बढ़ना हर एक आदमी का ये विचार होता है कि मैं भी आगे बढ़ूं, और वैसा। Shipbreaking in less developed countries has become a major international concern. It remains extremely easy for a ship owner to circumvent existing laws that aim to protect developing countries from the dumping of toxic wastes. Environmental and human rights organizations argue that the International Maritime Organization, which is responsible for regulating the shipping industry, is not being held accountable for the human rights abuses and pollution caused by shipbreaking practices in South Asia today. Shipbreakers and local authorities argue that the economic benefits far outweigh the environmental degradation and occupational hazards. This industry serves an important need, but where is the balance between environmental protection, human rights, and commercial profits? I think it is unfair in some ways that you pass on the burden from a developed country to a developing country, and the developing country, which is still struggling with various other problems, had to deal with another issue of environmental injustice. All these people that believe in free market economics, they don't really believe in it if they can find a way to, externalize the cost and not put it on their books. And that's a distortion of economics. That's not true economics. Whenever you can prevent that, you'll have a pollution-free world. But nothing's going to cause that to happen unless world leaders pass laws. Mankind's greedy. If they can cut a ship on somebody's beach for a fraction of the cost without following rules, they're going to do it.